श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री पंचमुखी हनुमत् कवचम्। श्रीपार्वत्युवाच सदाशिववरस्वामिन् ज्ञानदं प्रियकारकः कवचादिमया सर्वं देवानां संश्रुतं प्रिय। इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं करुणानिधे वायुसूनोर्वरं येन नान्यदन्वेषितं भवेत्। साधकानां च सर्वस्वं हनुमत्प्रीतिवर्धनम्। श्रीशिव उवाच देवेशि दीर्घनयने दीक्षादीप्तकलेवरे मां पृच्छसि वरारोहे न कस्यापि मयोदितं। कथं वाच्यं हनुमतः कवचं कल्पपादपाम्। श्रीरूपा त्वमिदं नाना कुटमण्डितविग्रहं गह्वरं गुरुगम्यं च यत्र कुत्र वदिष्यसि तेन प्रत्युत पापानि जायन्ते गजगामिनि। अत एव महेशानि नो वाच्यं कवचं प्रिये। श्रीपार्वत्युवाच वदान्यस्य वचो नेदं नादेयं जगतीतले स्वं वदान्यावधि प्राण नाथो मे प्रियकृत्सदा। मह्यं च किं न दत्तं ते तदिदानीं वदाम्यहम्। गणपं शाक्तशौरे च शैवं वैष्णवमुत्तमं मन्त्रयन्त्रादिजालं हि मह्यं सामान्यतस्त्वया दत्तं। विशेषतो यद्यत् तत्सर्वं कथयामि ते। श्रीराम तारको मन्त्रः कोदण्डस्यापि मे प्रियः नृहरेः सामराजो हि कालिकाद्याः प्रियं वद। दशविद्याविशेषेण षोडशी मन्त्रनायिकाः दक्षिणामूर्तिसंज्ञोऽन्यो मन्त्रराजोधरापते। सहस्रार्जुन कस्यापि मन्त्रा येऽन्ये हनुमतः ये ते ह्यदेया देवेश तेऽपि मह्यं समर्पिताः। किं बहुक्तेन गिरिश प्रेमयान्त्रितचेतसा अर्धाङ्गमपि मह्यं ते दत्तं किं ते वदाम्यहम्। स्त्रीरूपं मम जीवेश पूर्वं तु न विचारितम्। श्रीशिव उवाच सत्यं सत्यं वरारोहे सर्वं दत्तं मया तव परन्तु गिरिजेतुभ्यं कथ्यते शृणु साम्प्रतं। कलौ पाखण्डबहुला नानावेशधरा नराः ज्ञानहीना लुब्धकाश्च वर्णाश्रमबहिष्कृताः वैष्णवत्वेन विख्याताः शैवत्वेन वरानन शाक्तत्वेन च देवेशि सौरत्वेनेतरे जनाः गाणपत्वेन गिरिजे शास्त्रज्ञानबहिष्कृताः गुरुत्वेन समाख्याता विचरिष्यन्ति भूतले। ते शिष्यसङ्ग्रहं कर्तुम् उद्युक्ता यत्र कुत्रचित् मन्त्राद्युच्चारणे तेषां नास्ति सामर्थ्यमम्बिके। तच्छिष्याणां च गिरिजे तथापि जगतीतले
पठन्ति पाठयिष्यन्ति विप्रद्वेषपरः सदा द्विजद्वेषपराणां हि नरके पतनं ध्रुवम् प्रकृतं वच्मि गिरिजे यन्मया पूर्वमीरितं नानारूपमिदं नानाकूटमण्डितविग्रहं तत्रोत्तरं महेशाने शृणुयत्नेन साम्प्रतं तुभ्यं मया यदा देवी वक्तव्यं कवचं शुभं नानाकूटमयं पश्चात् त्वयापि प्रेमतः प्रियां वक्तव्यं कुत्रचित्तत्तु भुवने विचरिष्यति विश्वान्तः पातिनां भद्रे यदि पुण्यवतां सतां सत्सम्प्रदाय शुद्धानां दीक्षामन्त्रवतां प्रिये ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या विशेषेण वरानने उच्चारणे समर्थानां शास्त्रनिष्ठावतां सदा हस्तागतं भवेत् भद्रे तदा ते पुण्यमुत्तमम् अन्यथा शूद्रजातीनां पूर्वोक्तानां महेश्वरी मुखशुद्धिविहीनानां दाम्भिकानां सुरेश्वरी यदा हस्तगतं तस्यात् तदा पापं महत्तव तस्माद्विचार्य देवेशि ह्यधिकारिणमम्बिके वक्तव्यं नात्र सन्देहो ह्यन्यथा निरयं व्रजेत् किं कर्तव्यं मया तुभ्यम् उच्यते प्रेमतः प्रिये त्वयापीदं विशेषेण गोपनीयं स्वयोनिवत् ॐ श्री पंचवदनाय आञ्जनेयाय नमः। ॐ अस्य श्री पंचमुख हनुमन्मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः पंचमुख विराट हनुमान् देवता ह्रीं बीजां श्रीं शक्तिः क्रौं कीलकां क्रूं कवचां क्रें अस्त्राय फट् इति दिग्बन्धः। श्रीगरुड उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियां पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदां पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभां दंष्ट्राकरालवदनं भ्रिकुटिकुटिलेक्षणाम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतं अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं
मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवाम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहं प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितां दिव्यमाल्याम्बरधरां दिव्यगन्धानुलेपनां सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखां पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्ण वक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलते ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारकाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनायोत्तरमुखाय आदिवराहाय सकलसम्पत्कराय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनायोर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशङ्कराय स्वाहा ॐ अस्य श्री पञ्चमुख हनुमन्मन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः पञ्चमुख वीर हनुमान् देवता हनुमानिति बीजं वायुपुत्र इति शक्तिः अंजनासुत इति कीलकं श्रीरामदूत हनुमत्प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः इति ऋष्यादिकं विन्यसेत् ॐ अंजनासुताय अंगुष्ठाभ्यां नमः ॐ रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः ॐ वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः ॐ अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः ॐ रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ पञ्चमुख हनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः इति करन्यासः ॐ अंजनासुताय हृदयाय नमः ॐ रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा ॐ वायुपुत्राय शिखायै वषट् ॐ अग्निगर्भाय कवचाय हुं ॐ रामदूताय नेत्रत्रयाय वषट् ॐ पञ्चमुख हनुमते अस्त्राय फट् पञ्चमुख हनुमते स्वाहा इति दिग्बन्धः अथ ध्यानम् वन्दे वानर नारसिंह खगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितां दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरशिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिं हलां
खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहम् अथ मन्त्रः ॐ श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीतादुःखनिवारणाय लङ्कादहनकारणाय महाबलप्रचण्डाय फाल्गुनसखाय कोलाहल सकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्र निर्लङ्घनाय पिङ्गलनयनायामित विक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवनाय दुष्टनिवारणाय दृष्टिनिरालङ्कृताय सञ्जीविनी सञ्जीवित अंगदलक्ष्मण महाकपि सैन्यप्राणदाय दशकण्ठ विध्वंसनाय रामेष्टाय महाफाल्गुनसखाय सीतासहित रामवरप्रदाय षट्प्रयोगागम पञ्चमुखवीर हनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः ॐ हरिमर्कटमर्कटाय बं 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 वौषट् स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खें 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 मारणाय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय लों 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 आकर्षित सकलसम्पत्कराय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय धं 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 शत्रुस्तम्भनाय स्वाहा ॐ टं 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 कूर्ममूर्तये पञ्चमुखवीर हनुमते परयन्त्र परतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा ॐ कं खं गं घं यं चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं शं सं हं लं क्षं स्वाहा इति दिग्बन्धः ॐ पूर्वकपिमुखाय पञ्चमुख हनुमते टं 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 सकलशत्रुसंहारणाय स्वाहा ॐ दक्षिणमुखाय पञ्चमुख हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रें ह्रौं ह्रः सकलभूतप्रेत दमनाय स्वाहा ॐ पश्चिममुखाय गरुडाननाय पञ्चमुख हनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा ॐ उत्तरमुखायादि वराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकण्ठमूर्तये पञ्चमुख हनुमते स्वाहा ॐ ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रों 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 रुद्रमूर्तये सकलप्रयोजन निर्वाहकाय स्वाहा ॐ अञ्जनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय श्रीरामचन्द्र कृपापादुकाय महावीर्य प्रमथनाय ब्रह्माण्डनाथाय कामदाय पञ्चमुख वीरहनुमते स्वाहा भूतप्रेत पिशाच ब्रह्मराक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्ष ग्रह परयंत्र परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा सकल प्रयोजन निर्वाहकाय पंचमुख वीर हनुमते श्रीरामचंद्र वरप्रसादाय जं 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 स्वाहा। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठिन्नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रं
सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवशङ्करं षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववशङ्करं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यं इष्टकामार्थसिद्धिदां नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवां निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात् श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। श्रीपार्वत्युवाच सदाशिववरस्वामिन् ज्ञानदं प्रियकारकः कवचादिमया सर्वं देवानां संश्रुतं प्रिय इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं करुणानिधे वायुसूनोर्वरं येन नान्यदन्वेषितं भवेत् साधकानां च सर्वस्वं हनुमत्प्रीतिवर्धनं श्रीशिव उवाच देवेशि दीर्घनयने दीक्षादीप्तकलेवरे मां पृच्छसि वरारोहे न कस्यापि मयोदितं कथं वाच्यं हनुमतः कवचं कल्पपादपां श्रीरूपा त्वमिदं नाना कुटमण्डितविग्रहं गह्वरं गुरुगम्यं च यत्र कुत्र वदिष्यसि तेन प्रत्युत पापानि जायन्ते गजगामिनी अत एव महेशानि नो वाच्यं कवचं प्रिये। श्रीपार्वत्युवाच वदान्यस्य वचो नेदं नादेयं जगतीतले स्वं वदान्यावधि प्राण नाथो मे प्रियकृत् सदा मह्यं च किं न दत्तं ते तदिदानीं वदाम्यहं गणपं शाक्तशौरे च शैवं वैष्णवमुत्तमां मन्त्रयन्त्रादिजालं हि मह्यं सामान्यतस्त्वया दत्तं विशेषतो यद्यत् तत्सर्वं कथयामि ते। श्रीरामतारको मन्त्रः कोदण्डस्यापि मे प्रियः नृहरेः सामराजो हि कालिकाद्याः प्रियं वद। दशविद्याविशेषेण षोडशी मन्त्रनायिकाः दक्षिणामूर्तिसंज्ञोऽन्यो मन्त्रराजोधरापते सहस्रार्जुन कस्यापि मन्त्रा येऽन्ये हनुमतः ये ते ह्यदेया देवेश तेऽपि मह्यं समर्पिताः किं बहुक्तेन गिरिश प्रेमयान्त्रितचेतसा अर्धाङ्गमपि मह्यं ते दत्तं किं ते वदाम्यहं स्त्रीरूपं मम जीवेश पूर्वं तु न विचारितं। श्रीशिव उवाच सत्यं सत्यं वरारोहे सर्वं दत्तं मया तव
परन्तु गिरिजेतोभ्यां कथ्यते शृणु साम्प्रतां कलौ पाखण्डबहुला नानावेशधरा नराः ज्ञानहीना लुब्धकाश्च वर्णाश्रमबहिष्कृताः वैष्णवत्वेन विख्याताः शैवत्वेन वरानना शाक्तत्वेन च देवेशी सौरत्वेनेतरे जनाः गाणपत्वेन गिरिजे शास्त्रज्ञानबहिष्कृताः गुरुत्वेन समाख्याता विचरिष्यन्ति भूतले ते शिष्यसङ्ग्रहं कर्तुम् उद्युक्ता यत्र कुत्रचित् मन्त्राद्युच्चारणे तेषां नास्ति सामर्थ्यमम्बिके तच्छिष्याणां च गिरिजे तथापि जगतीतले पठन्ति पाठयिष्यन्ति विप्रद्वेषपरः सदा द्विजद्वेषपराणां हि नरके पतनं ध्रुवं प्रकृतं वच्मि गिरिजे यन्मया पूर्वमीरितं नानारूपमिदं नानाकूटमण्डितविग्रहं तत्रोत्तरं महेशाने शृणुयत्नेन साम्प्रतां तुभ्यं मया यदा देवी वक्तव्यं कवचं शुभं नानाकूटमयं पश्चात् त्वयापि प्रेमतः प्रियां वक्तव्यं कुत्रचित् तत्तु भुवने विचरिष्यति विश्वान्तः पातिनां भद्रे यदि पुण्यवतां सतां सत्सम्प्रदाय शुद्धानां दीक्षामन्त्रवतां प्रिये ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या विशेषेण वरानने उच्चारणे समर्थानां शास्त्रनिष्ठावतां सदा हस्तागतं भवेत् भद्रे तदा ते पुण्यमुत्तमम् अन्यथा शूद्रजातीनां पूर्वोक्तानां महेश्वरी मुखशुद्धिविहीनानां दाम्भिकानां सुरेश्वरी यदा हस्तगतं तस्यात् तदा पापं महत्तव तस्माद् विचार्य देवेशी ह्यधिकारिणमम्बिके वक्तव्यं नात्र सन्देहो ह्यन्यथा निरयं व्रजेत् किं कर्तव्यं मया तुभ्यम् उच्यते प्रेमतः प्रिये त्वयापीदं विशेषेण गोपनीयं स्वयोनिवत् ॐ श्री पंचवदनाय आञ्जनेयाय नमः। ॐ अस्य श्री पंचमुख हनुमन् मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः पंचमुख विराट हनुमान् देवता ह्रीं बीजां श्रीं शक्तिः क्रौं कीलकां क्रूं कवचां क्रें अस्त्राय फट् इति दिग्बन्धः। श्रीगरुड उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदां पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभां दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणाम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतं
अत्युग्रतेजो वपुषां भीषणं भयनाशनां पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवाम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहं प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितां दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्ण वक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलते ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारकाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा ॐ नमो भगवते पंचवदनायोत्तरमुखाय आदिवराहाय सकलसम्पत्कराय स्वाहा ॐ नमो भगवते पंचवदनायोर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशङ्कराय स्वाहा ॐ अस्य श्री पंचमुख हनुमन्मन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः पंचमुख वीर हनुमान् देवता हनुमानिति बीजं वायुपुत्र इति शक्तिः अंजनासुत इति कीलकं श्रीरामदूत हनुमत्प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः इति ऋष्यादिकं विन्यसेत् ॐ अंजनासुताय अंगुष्ठाभ्यां नमः ॐ रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः ॐ वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः ॐ अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः ॐ रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ पंचमुख हनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः
इति करन्यासः। ॐ अञ्जनासुताय हृदयाय नमः। ॐ रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ॐ वायुपुत्राय शिखायै वषट्। ॐ अग्निगर्भाय कवचाय हुं। ॐ रामदूताय नेत्रत्रयाय वषट्। ॐ पञ्चमुख हनुमते अस्त्राय फट्। पञ्चमुख हनुमते स्वाहा इति दिग्बन्धः। अथ ध्यानम्। वन्दे वानरनारसिंहखगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्विताम् दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा। हस्ताब्जैरशिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिं हलां। खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहाम्। अथ मन्त्रः। ॐ श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीतादुःखनिवारणाय लङ्कादहनकारणाय महाबलप्रचण्डाय फाल्गुनसखाय कोलाहल सकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्र निर्लङ्घनाय पिङ्गलनयनायामित विक्रमाय सूर्यबिम्ब फलसेवनाय दुष्टनिवारणाय दृष्टिनिरालङ्कृताय सञ्जीविनी सञ्जीवित अंगदलक्ष्मण महाकपि सैन्यप्राणदाय दशकण्ठ विध्वंसनाय रामेष्टाय महाफाल्गुनसखाय सीतासहित रामवरप्रदाय षट्प्रयोगागम पञ्चमुखवीर हनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय बं 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 वौषट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खें 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 मारणाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय लों 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 आकर्षित सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय धं 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 शत्रुस्तम्भनाय स्वाहा। ॐ टं 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 कूर्ममूर्तये पञ्चमुखवीर हनुमते परयन्त्र परतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा। ॐ कं खं गं घं यं चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं शं सं हं लं क्षं स्वाहा इति दिग्बन्धः। ॐ पूर्वकपिमुखाय पञ्चमुख हनुमते टं 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 सकलशत्रुसंहारणाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखाय पञ्चमुख हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः सकलभूतप्रेत दमनाय स्वाहा। ॐ पश्चिममुखाय गरुडाननाय पञ्चमुख हनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा। ॐ उत्तरमुखायादि वराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकण्ठमूर्तये पञ्चमुख हनुमते स्वाहा। ॐ ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रों 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 रों
रुद्रमूर्तये सकलप्रयोजन निर्वाहकाय स्वाहा। ॐ अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय श्रीरामचन्द्र कृपापादुकाय महावीर्य प्रमथनाय ब्रह्माण्डनाथाय कामदाय पंचमुख वीरहनुमते स्वाहा। भूतप्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्ष ग्रह परयंत्र परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। सकल प्रयोजन निर्वाहकाय पंचमुख वीर हनुमते श्रीरामचंद्र वरप्रसादाय जम 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 स्वाहा। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पंचवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवशङ्करं षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववशङ्करं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यं इष्टकामार्थसिद्धिदां नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवां निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात्। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। श्रीपार्वत्युवाच सदाशिववरस्वामिन् ज्ञानदं प्रियकारकः कवचादिमया सर्वं देवानां संश्रुतं प्रिय इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं करुणानिधे वायुसूनोर्वरं येन नान्यदन्वेषितं भवेत् साधकानां च सर्वस्वं हनुमत्प्रीतिवर्धनम्। श्रीशिव उवाच देवेशि दीर्घनयने दीक्षादीप्तकलेवरे मां पृच्छसि वरारोहे न कस्यापि मयोदितं कथं वाच्यं हनुमतः कवचं कल्पपादपां श्रीरूपा त्वमिदं नाना कुटमण्डितविग्रहं गह्वरं गुरुगम्यं च यत्र कुत्र वदिष्यसि तेन प्रत्युत पापानि जायन्ते गजगामिनी अत एव महेशानि नो वाच्यं कवचं प्रिये। श्रीपार्वत्युवाच वदान्यस्य वचो नेदं नादेयं जगतीतले स्वं वदान्यावधि प्राण नाथो मे प्रियकृत् सदा मह्यं च किं न दत्तं ते तदिदानीं वदाम्यहं गणपं शाक्तशौरे च शैवं वैष्णवमुत्तमं मन्त्रयन्त्रादिजालं हि मह्यं सामान्यतस्त्वया दत्तं विशेषतो यद्यत् तत्सर्वं कथयामि ते। श्रीरामतारको मन्त्रः
कोदण्डस्यापि मे प्रियः नृहरेः सामराजो हि कालिकाद्याः प्रियं वद 10 विद्याविशेषेण 16 मन्त्रनायिकाः दक्षिणामूर्तिसंज्ञोऽन्यो मन्त्रराजो धरापते सहस्रार्जुन कस्यापि मन्त्रायेन्ये हनुमतः ये ते ह्यदेया देवेश तेऽपि मह्यं समर्पिताः किं बहुक्तेन गिरिश प्रेमयान्त्रितचेतसा अर्धाङ्गमपि मह्यं ते दत्तं किं ते वदाम्यहं स्त्रीरूपं मम जीवेश पूर्वं तु न विचारितं श्रीशिव उवाच सत्यं सत्यं वरारोहे सर्वं दत्तं मया तव परन्तु गिरिजेतोभ्यं कथ्यते शृणु साम्प्रतं कलौ पाखण्डबहुला नानावेशधरा नराः ज्ञानहीना लुब्धकाश्च वर्णाश्रमबहिष्कृताः वैष्णवत्वेन विख्याताः शैवत्वेन वरानन शाक्तत्वेन च देवेशि सौरत्वेनेतरे जनाः गाणपत्वेन गिरिजे शास्त्रज्ञानबहिष्कृताः गुरुत्वेन समाख्याता विचरिष्यन्ति भूतले ते शिष्यसङ्ग्रहं कर्तुम् उद्युक्ता यत्र कुत्रचित् मन्त्राद्युच्चारणे तेषां नास्ति सामर्थ्यमम्बिके तच्छिष्याणां च गिरिजे तथापि जगतीतले पठन्ति पाठयिष्यन्ति विप्रद्वेषपरः सदा द्विजद्वेषपराणां हि नरके पतनं ध्रुवम् प्रकृतं वच्मि गिरिजे यन्मया पूर्वमीरितं नानारूपमिदं नाना कूटमण्डितविग्रहं तत्रोत्तरं महेशाने शृणुयत्नेन साम्प्रतं तुभ्यं मया यदा देवी वक्तव्यं कवचं शुभं नानाकूटमयं पश्चात् त्वयापि प्रेमतः प्रियं वक्तव्यं कुत्रचित्तत्तु भुवने विचरिष्यति विश्वान्तः पातिनां भद्रे यदि पुण्यवतां सतां सत्सम्प्रदाय शुद्धानां दीक्षामन्त्रवतां प्रिये ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या विशेषेण वरानने उच्चारणे समर्थानां शास्त्रनिष्ठावतां सदा हस्तागतं भवेद्भद्रे तदा ते पुण्यमुत्तमम् अन्यथा शूद्रजातीनां पूर्वोक्तानां महेश्वरी मुखशुद्धिविहीनानां दाम्भिकानां सुरेश्वरी यदा हस्तगतं तस्यात् तदा पापं महत्तव तस्माद्विचार्य देवेशि ह्यधिकारिणमम्बिके वक्तव्यं नात्र सन्देहो ह्यन्यथा निरयं व्रजेत् किं कर्तव्यं मया तुभ्यम् उच्यते प्रेमतः प्रिये त्वयापीदं विशेषेण गोपनीयं स्वयोनिवत् ॐ श्री पंचवदनाय आञ्जनेयाय नमः।
ॐ अस्य श्री पञ्चमुख हनुमन् मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः पञ्चमुख विराट हनुमान् देवता ह्रीं बीजां श्रीं शक्तिः क्रौं कीलकां क्रूं कवचां क्रें अस्त्राय फट् इति दिग्बन्धः। श्रीगरुड उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदां पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभां दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटिकुटिलेक्षणाम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवाम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहं प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितां दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्ण वक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर। ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलते। ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारकाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनायोत्तरमुखाय
आदिवराहाय सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनायोर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशङ्कराय स्वाहा। ॐ अस्य श्री पञ्चमुख हनुमन्मन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः पञ्चमुख वीर हनुमान् देवता हनुमानिति बीजं वायुपुत्र इति शक्तिः अंजनासुत इति कीलकं श्रीरामदूत हनुमत्प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः इति ऋष्यादिकं विन्यसेत्। ॐ अंजनासुताय अंगुष्ठाभ्यां नमः। ॐ रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। ॐ वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः। ॐ अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः। ॐ रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ पञ्चमुख हनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः इति करन्यासः। ॐ अंजनासुताय हृदयाय नमः। ॐ रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ॐ वायुपुत्राय शिखायै वषट्। ॐ अग्निगर्भाय कवचाय हुम्। ॐ रामदूताय नेत्रत्रयाय वषट्। ॐ पञ्चमुख हनुमते अस्त्राय फट्। पञ्चमुख हनुमते स्वाहा इति दिग्बन्धः। अथ ध्यानम्। वन्दे वानरनारसिंह खगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितां दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरशिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिं हलां खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहाम्। अथ मन्त्रः। ॐ श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीतादुःखनिवारणाय लङ्कादहनकारणाय महाबलप्रचण्डाय फाल्गुनसखाय कोलाहल सकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्र निर्लङ्घनाय पिङ्गलनयनायामित विक्रमाय सूर्यबिम्ब फलसेवनाय दुष्टनिवारणाय दृष्टिनिरालङ्कृताय सञ्जीविनी सञ्जीवित अंगदलक्ष्मण महाकपि सैन्यप्राणदाय दशकण्ठ विध्वंसनाय रामेष्टाय महाफाल्गुनसखाय सीतासहित रामवरप्रदाय षट्प्रयोगागम पञ्चमुखवीर हनुमन्मन्त्र जपे विनियोगः। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय बम 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 वौषट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खें 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 मारणाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय लों 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 आकर्षित सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय धं 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 शत्रुस्तम्भनाय स्वाहा। ॐ टं 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 कूर्ममूर्तये पञ्चमुखवीर हनुमते परयन्त्र परतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा। ॐ कं खं गं घं यं चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं
यं रं लं वं शं शं सं हं लं क्षं स्वाहा इति दिग्बन्धः। ॐ पूर्वकपिमुखाय पञ्चमुख हनुमते टं 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 सकलशत्रुसंहारणाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखाय पञ्चमुख हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रें ह्रौं ह्रः सकलभूतप्रेत दमनाय स्वाहा। ॐ पश्चिममुखाय गरुडाननाय पञ्चमुख हनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा। ॐ उत्तरमुखायादि वराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकण्ठमूर्तये पञ्चमुख हनुमते स्वाहा। ॐ ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रुं 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 रुद्रमूर्तये सकलप्रयोजन निर्वाहकाय स्वाहा। ॐ अञ्जनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय श्रीरामचन्द्र कृपापादुकाय महावीर्य प्रमथनाय ब्रह्माण्डनाथाय कामदाय पञ्चमुख वीरहनुमते स्वाहा। भूतप्रेत पिशाच ब्रह्मराक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्ष ग्रह परयंत्र परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। सकल प्रयोजन निर्वाहकाय पञ्चमुख वीरहनुमते श्रीरामचन्द्र वरप्रसादाय जं 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 स्वाहा। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठिन्नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवशङ्करं षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववशङ्करं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यं इष्टकामार्थसिद्धिदां नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवां निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात्। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। श्रीपार्वत्युवाच सदाशिववरस्वामिन् ज्ञानदं प्रियकारकः कवचादिमया सर्वं देवानां संश्रुतं प्रिय इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं करुणानिधे वायुसूनोर्वरं येन नान्यदन्वेषितं भवेत् साधकानां च सर्वस्वं हनुमत्प्रीतिवर्धनम्। श्रीशिव उवाच देवेशि दीर्घनयने दीक्षादीप्तकलेवरे मां पृच्छसि वरारोहे न कस्यापि मयोदितं कथं वाच्यं हनुमतः कवचं कल्पपादपाम्। श्रीरूपा त्वमिदं नाना कुटमण्डितविग्रहं
गह्वरं गुरुगम्यं च यत्र कुत्र वदिष्यसि तेन प्रत्युत पापानि जायन्ते गजगामिनि। अत एव महेशानि नो वाच्यं कवचं प्रिये। श्रीपार्वत्युवाच वदान्यस्य वचो नेदं नादेयं जगतीतले स्वं वदान्यावधि प्राण नाथो मे प्रियकृत् सदा। मह्यं च किं न दत्तं ते तदिदानीं वदाम्यहं। गणपं शाक्तशौरे च शैवं वैष्णवमुत्तमं मन्त्रयन्त्रादिजालं हि मह्यं सामान्यतस्त्वया दत्तं विशेषतो यद्यत् तत्सर्वं कथयामि ते। श्रीरामतारको मन्त्रः कोदण्डस्यापि मे प्रियः नृहरेः सामराजो हि कालिकाद्याः प्रियं वद। दशविद्याविशेषेण षोडशी मन्त्रनायिकाः दक्षिणामूर्तिसंज्ञोऽन्यो मन्त्रराजो धरापते सहस्रार्जुनकस्यापि मन्त्रा येऽन्ये हनुमतः। ये ते ह्यदेया देवेश तेऽपि मह्यं समर्पिताः किं बहुक्तेन गिरिश प्रेमयान्त्रितचेतसा। अर्धाङ्गमपि मह्यं ते दत्तं किं ते वदाम्यहं। स्त्रीरूपं मम जीवेश पूर्वं तु न विचारितं। श्रीशिव उवाच सत्यं सत्यं वरारोहे सर्वं दत्तं मया तव परन्तु गिरिजेतोभ्यं कथ्यते शृणु साम्प्रतं। कलौ पाखण्डबहुला नानावेशधरा नराः ज्ञानहीना लुब्धकाश्च वर्णाश्रमबहिष्कृताः वैष्णवत्वेन विख्याताः शैवत्वेन वरानन शाक्तत्वेन च देवेशि सौरत्वेनेतरे जनाः गाणपत्वेन गिरिजे शास्त्रज्ञानबहिष्कृताः गुरुत्वेन समाख्याता विचरिष्यन्ति भूतले। ते शिष्यसङ्ग्रहं कर्तुम् उद्युक्ता यत्र कुत्रचित् मन्त्राद्युच्चारणे तेषां नास्ति सामर्थ्यमम्बिके। तच्छिष्याणां च गिरिजे तथापि जगतीतले पठन्ति पाठयिष्यन्ति विप्रद्वेषपरः सदा। द्विजद्वेषपराणां हि नरके पतनं ध्रुवम्। प्रकृतं वच्मि गिरिजे यन्मया पूर्वमीरितं नानारूपमिदं नाना कूटमण्डितविग्रहं तत्रोत्तरं महेशाने शृणुयत्नेन साम्प्रतं। तुभ्यं मया यदा देवी वक्तव्यं कवचं शुभं नानाकूटमयं पश्चात् त्वयापि प्रेमतः प्रियं वक्तव्यं कुत्रचित्तत्तु भुवने विचरिष्यति विश्वान्तः पातिनां भद्रे यदि पुण्यवतां सतां सत्सम्प्रदाय शुद्धानां दीक्षामन्त्रवतां प्रिये ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या विशेषेण वरानने उच्चारणे समर्थानां
शास्त्रनिष्ठावतां सदा हस्तागतं भवेद्भद्रे तदा ते पुण्यमुत्तमाम् अन्यथा शूद्रजातीनां पूर्वोक्तानां महेश्वरी मुखशुद्धिविहीनानां दाम्भिकानां सुरेश्वरी यदा हस्तगतं तस्यात् तदा पापं महत्तव तस्माद्विचार्य देवेशि ह्यधिकारिणमम्बिके वक्तव्यं नात्र सन्देहो ह्यन्यथा निरयं व्रजेत् किं कर्तव्यं मया तुभ्यम् उच्यते प्रेमतः प्रिये त्वयापीदं विशेषेण गोपनीयं स्वयोनिवत् ॐ श्री पंचवदनाय आञ्जनेयाय नमः। ॐ अस्य श्री पंचमुख हनुमन्मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः पंचमुख विराट हनुमान् देवता ह्रीं बीजां श्रीं शक्तिः क्रौं कीलकां क्रूं कवचां क्रें अस्त्राय फट् इति दिग्बन्धः। श्रीगरुड उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियां पञ्चवक्त्रं महाभीमां त्रिपञ्चनयनैर्युतां बाहुभिर्दशभिर्युक्तां सर्वकामार्थसिद्धिदां पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभां दंष्ट्राकरालवदनं भ्रिकुटिकुटिलेक्षणाम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुताम् अत्युग्रतेजो वपुषां भीषणं भयनाशनां पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवाम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहं प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितां दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्ण वक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर। ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं
परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलते ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारकाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा ॐ नमो भगवते पंचवदनायोत्तरमुखाय आदिवराहाय सकलसम्पत्कराय स्वाहा ॐ नमो भगवते पंचवदनायोर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशङ्कराय स्वाहा ॐ अस्य श्री पंचमुख हनुमन्मन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः पंचमुख वीर हनुमान् देवता हनुमानिति बीजं वायुपुत्र इति शक्तिः अंजनासुत इति कीलकं श्रीरामदूत हनुमत्प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः इति ऋष्यादिकं विन्यसेत् ॐ अंजनासुताय अंगुष्ठाभ्यां नमः ॐ रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः ॐ वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः ॐ अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः ॐ रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ पंचमुख हनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः इति करन्यासः ॐ अंजनासुताय हृदयाय नमः ॐ रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा ॐ वायुपुत्राय शिखायै वषट् ॐ अग्निगर्भाय कवचाय हुम् ॐ रामदूताय नेत्रत्रयाय वौषट् ॐ पंचमुख हनुमते अस्त्राय फट् पंचमुख हनुमते स्वाहा इति दिग्बन्धः अथ ध्यानम् वन्दे वानर नारसिंह खगराट् क्रोडास्ववक्त्रान्वितां दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरशिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिं हलां खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहाम् अथ मन्त्रः ॐ श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीतादुःखनिवारणाय लङ्कादहनकारणाय महाबलप्रचण्डाय फाल्गुनसखाय कोलाहल सकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्र निर्लङ्घनाय पिङ्गलनयनायामित विक्रमाय सूर्यबिम्ब फलसेवनाय दुष्टनिवारणाय दृष्टिनिरालङ्कृताय सञ्जीविनी सञ्जीवित अंगदलक्ष्मण महाकपि सैन्यप्राणदाय दशकण्ठ विध्वंसनाय रामेष्टाय महाफाल्गुनसखाय सीतासहित रामवरप्रदाय षट्प्रयोगागम पंचमुखवीर हनुमन्मन्त्र जपे विनियोगः ॐ हरिमर्कटमर्कटाय बम 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 वौषट् स्वाहा
ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खें 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 मारणाय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय लों 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 आकर्षित सकलसम्पत्कराय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय धं 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 शत्रुस्तम्भनाय स्वाहा ॐ टं 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 कूर्ममूर्तये पञ्चमुखवीरहनुमते परयन्त्र परतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा ॐ कं खं गं घं यं चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं शं सं हं लं क्षं स्वाहा इति दिग्बन्धः ॐ पूर्वकपिमुखाय पञ्चमुखहनुमते टं 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 सकलशत्रुसंहारणाय स्वाहा ॐ दक्षिणमुखाय पञ्चमुखहनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रें ह्रौं ह्रः सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा ॐ पश्चिममुखाय गरुडाननाय पञ्चमुखहनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा ॐ उत्तरमुखायादिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकण्ठमूर्तये पञ्चमुखहनुमते स्वाहा ॐ ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रों 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 रुद्रमूर्तये सकलप्रयोजननिर्वाहकाय स्वाहा ॐ अञ्जनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय श्रीरामचन्द्र कृपापादुकाय महावीर्यप्रमथनाय ब्रह्माण्डनाथाय कामदाय पञ्चमुखवीरहनुमते स्वाहा भूतप्रेत पिशाच ब्रह्मराक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्ष ग्रह परयंत्र परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा सकल प्रयोजन निर्वाहकाय पंचमुख वीर हनुमते श्रीरामचंद्र वरप्रसादाय जम 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 स्वाहा। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठिन्नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवशङ्करं षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववशङ्करं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं अष्टवारं पठेन्नित्यं इष्टकामार्थसिद्धिदां नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात्। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। श्रीपार्वत्युवाच सदाशिववरस्वामिन्
ज्ञानदं प्रियकारकः कवचादिमया सर्वं देवानां संश्रुतं प्रिय इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं करुणानिधे वायुसूनोर्वरं येन नान्यदन्वेषितं भवेत् साधकानां च सर्वस्वं हनुमत्प्रीतिवर्धनम् श्रीशिव उवाच देवेशि दीर्घनयने दीक्षादीप्तकलेवरे मां पृच्छसि वरारोहे न कस्यापि मयोदितं कथं वाच्यं हनुमतः कवचं कल्पपादपां श्रीरूपा त्वमिदं नाना कुटमण्डितविग्रहं गह्वरं गुरुगम्यं च यत्र कुत्र वदिष्यसि तेन प्रत्युत पापानि जायन्ते गजगामिनी अत एव महेशानि नो वाच्यं कवचं प्रिये श्रीपार्वत्युवाच वदान्यस्य वचो नेदं नादेयं जगतीतले स्वं वदान्यावधि प्राण नाथो मे प्रियकृत्सदा मह्यं च किं न दत्तं ते तदिदानीं वदाम्यहं गणपं शाक्तशौरे च शैवं वैष्णवमुत्तमं मन्त्रयन्त्रादिजालं हि मह्यं सामान्यतस्त्वया दत्तं विशेषतो यद्यत् तत्सर्वं कथयामि ते श्रीरामतारको मन्त्रः कोदण्डस्यापि मे प्रियः नृहरेः सामराजो हि कालिकाद्याः प्रियं वद दशविद्याविशेषेण षोडशी मन्त्रनायिकाः दक्षिणामूर्तिसंज्ञोऽन्यो मन्त्रराजो धरापते सहस्रार्जुन कस्यापि मन्त्रा येऽन्ये हनुमतः ये ते ह्यदेया देवेश तेऽपि मह्यं समर्पिताः किं बहुक्तेन गिरिश प्रेमयान्त्रितचेतसा अर्धाङ्गमपि मह्यं ते दत्तं किं ते वदाम्यहं स्त्रीरूपं मम जीवेश पूर्वं तु न विचारितं श्रीशिव उवाच सत्यं सत्यं वरारोहे सर्वं दत्तं मया तव परन्तु गिरिजेतुभ्यं कथ्यते शृणु साम्प्रतं कलौ पाखण्डबहुला नानावेशधरा नराः ज्ञानहीना लुब्धकाश्च वर्णाश्रमबहिष्कृताः वैष्णवत्वेन विख्याताः शैवत्वेन वरानन शाक्तत्वेन च देवेशि सौरत्वेनेतरे जनाः गाणपत्वेन गिरिजे शास्त्रज्ञानबहिष्कृताः गुरुत्वेन समाख्याता विचरिष्यन्ति भूतले ते शिष्यसङ्ग्रहं कर्तुम् उद्युक्ता यत्र कुत्रचित् मन्त्राद्युच्चारणे तेषां नास्ति सामर्थ्यमम्बिके तच्छिष्याणां च गिरिजे तथापि जगतीतले पठन्ति पाठयिष्यन्ति विप्रद्वेषपरः सदा द्विजद्वेषपराणां हि नरके पतनं ध्रुवम् प्रकृतं वच्मि गिरिजे यन्मया पूर्वमीरितं
नानारूपमिदं नानाकूटमण्डितविग्रहं तत्रोत्तरं महेशाने शृणुयत्नेन साम्प्रतं तुभ्यं मया यदा देवी वक्तव्यं कवचं शुभं नानाकूटमयं पश्चात् त्वयापि प्रेमतः प्रियं वक्तव्यं कुत्रचित्तत्तु भुवने विचरिष्यति विश्वान्तः पातिनां भद्रे यदि पुण्यवतां सतां सत्सम्प्रदाय शुद्धानां दीक्षामन्त्रवतां प्रिये ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या विशेषेण वरानने उच्चारणे समर्थानां शास्त्रनिष्ठावतां सदा हस्तागतं भवेत् भद्रे तदा ते पुण्यमुत्तमम् अन्यथा शूद्रजातीनां पूर्वोक्तानां महेश्वरी मुखशुद्धिविहीनानां दाम्भिकानां सुरेश्वरी यदा हस्तगतं तस्यात् तदा पापं महत्तव तस्माद् विचार्य देवेशि ह्यधिकारिणमम्बिके वक्तव्यं नात्र सन्देहो ह्यन्यथा निरयं व्रजेत् किं कर्तव्यं मया तुभ्यम् उच्यते प्रेमतः प्रिये त्वयापीदं विशेषेण गोपनीयं स्वयोनिवत् ॐ श्री पंचवदनाय आञ्जनेयाय नमः। ॐ अस्य श्री पंचमुख हनुमन्मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः पंचमुख विराट हनुमान् देवता ह्रीं बीजां श्रीं शक्तिः क्रौं कीलकां क्रूं कवचां क्रें अस्त्राय फट् इति दिग्बन्धः। श्रीगरुड उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदां पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभां दंष्ट्राकरालवदनं भ्रिकुटिकुटिलेक्षणाम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम्
प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितां दिव्यमाल्याम्बरधरां दिव्यगन्धानुलेपनां सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखां पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्ण वक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर। ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलते। ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारकाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पंचवदनायोत्तरमुखाय आदिवराहाय सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पंचवदनायोर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशङ्कराय स्वाहा। ॐ अस्य श्री पंचमुख हनुमन्मन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः पंचमुख वीर हनुमान् देवता हनुमानिति बीजं वायुपुत्र इति शक्तिः अंजनासुत इति कीलकं श्रीरामदूत हनुमत्प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः इति ऋष्यादिकं विन्यसेत्। ॐ अंजनासुताय अंगुष्ठाभ्यां नमः। ॐ रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। ॐ वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः। ॐ अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः। ॐ रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ पंचमुख हनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः इति करन्यासः। ॐ अंजनासुताय हृदयाय नमः। ॐ रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ॐ वायुपुत्राय शिखायै वषट्। ॐ अग्निगर्भाय कवचाय हुम्। ॐ रामदूताय नेत्रत्रयाय वषट्। ॐ पंचमुख हनुमते अस्त्राय फट्। पंचमुख हनुमते स्वाहा इति दिग्बन्धः। अथ ध्यानम्। वन्दे वानर नारसिंह खगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितां दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरशिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिं हलां खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहाम्। अथ मन्त्रः। ॐ श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीतादुःखनिवारणाय लङ्कादहनकारणाय महाबलप्रचण्डाय फाल्गुनसखाय
कोलाहल सकल ब्रह्मांड विश्वरूपाय सप्तसमुद्र निर्लंघनाय पिंगल नयनायामित विक्रमाय सूर्यबिंब फल सेवनाय दुष्ट निवारणाय दृष्टि निरालंकृताय संजीविनी संजीवित अंगद लक्ष्मण महाकपि सैन्य प्राणदाय दशकंठ विध्वंसनाय रामेष्टाय महाफाल्गुन सखाय सीता सहित रामवर प्रदाय षट्प्रयोगागम पंचमुख वीर हनुमन् मंत्र जपे विनियोगः। ओम हरिमर्कट मर्कटाय बम 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 वौषट स्वाहा। ओम हरिमर्कट मर्कटाय फम 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 फट स्वाहा। ओम हरिमर्कट मर्कटाय खेम 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 मारणाय स्वाहा। ओम हरिमर्कट मर्कटाय लोम 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 आकर्षित सकल संपत्कराय स्वाहा। ओम हरिमर्कट मर्कटाय धम 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 शत्रुस्तंभनाय स्वाहा। ओम टम 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 कूर्ममूर्तये पंचमुख वीर हनुमते परयंत्र परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। ओम कम खम गम घम यम चम छम जम झम यम टम ठम डम ढम अणम तम थम दम धम नम पम फम बम भम मम यम रम लम वम शम शम सम हम लं क्षं स्वाहा इति दिग्बन्धः। ओम पूर्वकपिमुखाय पंचमुख हनुमते टम 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा। ओम दक्षिणमुखाय पंचमुख हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम पश्चिममुखाय गरुडाननाय पंचमुख हनुमते मम 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 सकल विषहराय स्वाहा। ओम उत्तरमुखायादि वराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकंठमूर्तये पंचमुख हनुमते स्वाहा। ओम ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रोम 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 रुद्रमूर्तये सकल प्रयोजन निर्वाहकाय स्वाहा। ओम अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोक निवारणाय श्रीरामचंद्र कृपापादुकाय महावीर्य प्रमथनाय ब्रह्मांडनाथाय कामदाय पंचमुख वीर हनुमते स्वाहा। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्ष ग्रह परयंत्र परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। सकल प्रयोजन निर्वाहकाय पंचमुख वीर हनुमते श्रीरामचंद्र वरप्रसादाय जम 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 स्वाहा। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठिन्नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पंचवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवशङ्करं षड्वारं च पठेन्नित्यं
सर्वदेववशङ्करं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यम् इष्टकामार्थसिद्धिदां नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवां निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात्। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु।